Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for ninth class. Today's our topic of discussion effects of water and dietary fiber. Today's we will discuss about the effects of water and dietary fiber. So first of all we need to know that what are dietary fibers. So dietary fiber is the part of human food which is indigestible. Part of the human food which is indigestible is called as the dietary fiber. Part of the human food which is indigestible called as dietary fiber. ठीक है, डाइटरी फाइबर इंसान की खुराक का वो हिस्सा है जो डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं होता. डाइटरी फाइबर इंसान की खुराक का वो हिस्सा है जो डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं होता. एंड एज वी ऑल नो अबाउट द वाटर, सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ. अप्रोक्सीमेटली 60% of the adult human body is composed of water, and nearly all the life sustaining chemical reactions require an aqueous environment. Similarly, water also regulates the body temperature by evaporation in a process called sweating. Similarly, the dehydration also causes severe cardiovascular problems. The estimated water requirement of an average adult is 2 liters per day. Estimated water requirement for an average adult is 2 liters per day. Important sources of daily water intake are natural water, milk, juicy fruits and vegetable. अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो ह्यूमन बॉडी का 60% हिस्सा जो है वो बनाता है, और जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें एक्वस इन्वायरमेंट चाहिए होता है. इसके अलावा वाटर जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है इवेपोरेशन के थ्रू, स्वेटिंग के प्रोसेस में. इसके अलावा अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाते हैं. इसके अगर हम देखें कि एक अडल्ट की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है तो 2 लीटर्स पर डे है. ठीक है, एवरेज जो रिक्वायरमेंट है वो 2 लीटर्स पर डे है. और सोर्सेज क्या हैं वाटर के? मिल्क है, जूसी फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स वगैरह हैं. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डाइटरी फाइबर. सो dietary fibers is the part of human food that is indigestible. There are two types of dietary fibers: insoluble dietary fibers and soluble dietary fibers. So what are insoluble dietary fibers? Insoluble dietary fibers travels quickly through the small intestine. And its sources are wheat, bran, cereals and skins of many fruits and vegetables. In case of soluble dietary fibers breaks down as it passes through the alimentary canal. And the sources of soluble dietary fibers are beans, oats, barley and many fruits and vegetables. अगर हम dietary fibers की बात करें तो dietary fibers क्या हैं? डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो इंसान की खुराक का वो हिस्सा है जो डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं होता. इसकी 2 टाइप्स हैं, एक इनसोल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं और दूसरे सोल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं. तो जो इनसोल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से तेज़ी के साथ गुजर जाते हैं, और इनके सोर्सेज जो हैं वो बहुत सारी सब्जियां और फल जो हैं उनकी स्किन होती है, यानी बहुत सारी सब्जियों और फलों की जिल्द होती है. ठीक है, इसके अलावा अनाज, भूसी वगैरह जो है वो इनके सोर्सेज में शामिल हैं. और सलोबल डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? सलोबल डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल से गुजरते वक्त टूट जाते हैं, और इनके सोर्सेज जो हैं वो क्या हैं? जो हैं फलियाँ हैं, कई फल और सब्जियां जो हैं वो इनके सोर्सेस हैं. एंड फाइबर आल्सो प्रिवेंट एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग द कंट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टिनल मसल्स. फाइबर जो है वो कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ प्रोवाइड करती है. ठीक है, नेक्स्ट वन बैलेंस डाइट. सो वी नीड टू नो दैट व्हाट आर बैलेंस डाइट. सो अ बैलेंस डाइट कैन बी डिफाइंड एज द वन which contains all the essential nutrient in correct proportion. Okay, the balanced diet can be defined as the diet which contains all the essential nutrients in correct proportion for the normal growth and the development of a body. Okay, and balanced diet is related to a person's age, gender and activity. ओके, तो बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें
तमाम के तमाम इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं और करेक्ट प्रपोर्शन में प्रेजेंट हैं, जो कि एक बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। अब बैलेंस डाइट डिपेंड करती है जेंडर पे, किसी की एक्टिविटी पे, एज पे, ठीक है। सो ये जेंडर के केस में डिफरेंट, लाइक मेल्स के लिए डिफरेंट होगी, फीमेल्स के लिए डिफरेंट होगी, ठीक है, और डिफरेंट एज के लोग जो हैं उनके लिए डिफरेंट होगी। सो दीज आर कॉमन फूड्स एंड द परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक food. Bread contains the carbohydrate 52%, lipids 3%, proteins 9%, rice contains 23% carbohydrate, 0.1% lipids and 2.2% proteins. Potato contains 19% carbohydrate, 0.1% lipids and 2% proteins. Apple contains 12.8% carbohydrate and 0.5% lipids and 0.3% proteins. Eggs contain 0.7% carbohydrate, 12% lipids and 13% proteins. Milk contains carbohydrates 4%, lipids 4% and proteins 3%. Butter contains carbohydrate 0.4%, lipids 81% and proteins 0.6%. Chicken contains carbohydrate 0%, lipids 11% and proteins 20%. Relation of balanced diet with age, gender and activity. During growing period of the body there is a higher metabolic rate in body cells and so body needs a balanced diet that contains more energy. Adult need less proteins per kilogram body weights, but a growing boy or girl needs more protein per kilogram वेट। अगर हम बात करें कि जो लोग ग्रो कर रहे होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है पर किलोग्राम, जैसे कि एक ग्रोइंग बॉय है या एक ग्रोइंग गर्ल है तो उसे पर किलोग्राम ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी। Similarly, males need more energy as compared to female because their metabolic rate is increased as compared to the females. Now mark the questions related to that topic. Question number 1 is given, what are dietary fibers? So these are dietary fibers. Dietary fiber is the part of human food that is indigestible. Question number 2 is given, differentiate between insoluble and soluble dietary fiber. So these are insoluble dietary fiber and these are soluble dietary fiber. Start from here and end at vegetables. Question number 3 is given, define balanced diet and its question will be start from here, balanced diet and ends at gender and activity. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। डाइटरी फाइबर्स क्या हैं, तो यहाँ से आपके पास डाइटरी फाइबर हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनसोल्यूबल और सोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स में फ़र्क करें, तो ये आपके पास यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स हैं और ये आपके पास सोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मतवाज़न ग़िज़ा की तारीफ़ करें। तो मतवाज़न ग़िज़ा जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मतवाज़न ग़िज़ा से मुराद ऐसी ग़िज़ा है और यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है, यहाँ तक है, ज़िंदगी से होता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।